Guys, welcome back to Gadgets 360 with Technical Guruji, the show wherein you learn about all the new gadgets. My name is Gaurav, aka Technical Guruji, and abhi it's time to go down a serious lane. Because at times gadgets are fun, we all use these phones with different apps. हम हर रोज कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हैं. We all enjoy technology. But if you think about it, at times things get really dirty. And this is what is going on, especially with multiple apps available across Play Store and App Store, and these apps are offering cheap loans. Just to begin, I must tell you, a student, Tejas, who was just 22 years old, committed suicide because of this loan wali apps. A family of 4 in Bhopal committed mass suicide. Again, reason being these apps offering cheap loans. मैं आपको बताता हूँ कि exactly होता क्या है, how they all operate. So if you know, in our country, RBI is the central governing body for everything money. And अगर आपको एक लोन चाहिए तो एक बैंक होगा. The bank would be like completely in alignment with the RBI terms and conditions. वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद you will get a loan for maybe a car, a house, or a personal loan, or like education, or like multiple things. You all know about it. But there are at times situations with people जो शायद एक क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रखते हैं, those who don't have, let's say, the eligibility to get a loan, और उनको जरूरत पड़ती है at times 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की. अभी multiple such apps are in existence. They get heavily promoted online on all platforms, and वहाँ से you get this recommendation that this is the app which gives you like this money in just 2 clicks. Now, once you download this app या ऐसी कोई भी और apps, because बहुत सारी हैं, it's a very simple process. I mean, without any verification, without any kind of requirement of let's say a list of documents from your side, you are instantly awarded that money. जो आपको पैसा चाहिए 10-15 हज़ार रुपए, they come into your account. But that's how the game starts. Because you all know the way it works across platforms. When you download an app, आपको कुछ permissions को allow करना होता है, and I mean it could be, let's say, access to the camera, access to the microphone, access to your files, your contacts, and multiple other stuff जो आप eventually apply करते हो while installing and opening that app for the first time. अब क्योंकि आपने ये पूरी एक्सेस की परमिशन दे दी है टू दिस ऐप, जब आपको एक बार पैसे मिले, द रिकवरी इज द बैड पार्ट. नंबर 1, दे चार्ज क्रेजी अमाउंट्स ऑफ इंटरेस्ट, एंड आई मीन जस्ट पैसे मिलने के 1 हफ्ते बाद से ही दैट रिकवरी स्टार्ट्स, द फॉलो अप स्टार्ट्स, एंड दैट इंटरेस्ट रेट्स आर लाइक रियली हाई. और अगर आप वो पे नहीं कर पाते हो, अगर आप उस टाइम सिचुएशन में नहीं हो दैट यू आर एबल टू मेक दैट पेमेंट, दे टेक द डर्टी वे. बिकॉज दे हैव एक्सेस टू ऑल योर कॉन्टैक्ट्स, एंड बिकॉज दे हैव एक्सेस टू ऑल योर फाइल्स व्हिच यू हैव इन योर फोन, दे ब्लैकमेल यू, प्लेन एंड सिंपल. दे सेंड काइंड ऑफ अब्यूजिव मैसेजेस टू योर कॉन्टैक्ट्स. वो सोशली आपकी रेपुटेशन को खराब करना स्टार्ट करते हैं. वो आपकी कुछ फोटोज अगर हैं आपकी गैलरी में, लेट्स से देयर आर सम इंटीमेट फोटोज, वो वहां से उनको पिक करते हैं, एंड दे काइंड ऑफ टेल यू, अगर आपने नहीं दिया पैसा या अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, दे विल सर्कुलेट दीज फोटोज अमंग योर कॉन्टैक्ट्स या फिर मल्टीपल अदर वेज. और ये सब जब चीजें शुरू होती हैं, इट्स अ प्रेशर दैट गेट्स बिल्ट अप, एंड द पार्ट काइंड ऑफ व्हिच प्लेज हियर, इट्स रियली bad. And at times ज़्यादा अमाउंट्स वसूली जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है, multiple forms of abuse all around, and at the end we have seen these examples, like how at times humans react to these apps and इन्हीं की ये policies. Now interestingly, these apps जब authorities ने backtrack किया just to figure out what's the modus operandi, इनका पीछे का पूरा सच क्या है, guys, the officials have found Chinese connections behind such apps.
I mean, they operate by some fake names to just sound local, to sometimes sound official that yeah, I mean, this could be an official source for this quick loan. अब वो लोन तो मिल जाता है, but वो लोन के बदले का जो पूरा एक्सपीरियंस होता है, no, it is beyond imagination. And I mean, those who have gone through it, I mean, they know, and definitely because this is something wherein people would not want to talk about, people would not want to share that they are facing such issues, and considering this constant blackmailing, the experience is, I mean, really dark. So simple stuff, stay away from all this. At the same time, if you think you are in any such trap, or your friend is going through one, the best is to contact the authorities. The official helpline number for cybercrime in India is 1930. The website is cybercrime.gov.in. Go on, register your complaint, go to the nearest police station. आप अपनी तरफ से action start कर दो, because बहुत ज़रूरी है that you talk about it.